Good morning students. We are studying chapter number 13, that is weather, climate and adaptation of the animals. Okay, this is your chapter number 13. First of all, we talk about weather. We always think of weather whenever we may be. Weather is one of the first things we notice after we wake up. If it is cold, we wear a sweater. If it is hot and sunny, we wear light cotton clothes. आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, हल्के से वार्म क्लॉथ लेते हैं, अपर वगैरह डाल रहे हैं. That means these days are cold. We may also look at the weather forecast in a newspaper or on the internet in case we have to go out for a picnic or for a holiday break. But what does weather imply? Let us find out. Weather is the state of atmosphere at a particular time and a place in terms of certain well-defined terms or elements. This is the definition of weather. Underline this. These elements are, क्या हो सकते हैं आपके? Temperature, humidity, cloudiness, precipitation, wind and atmospheric pressure. तो ये कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है. ये आपका टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, atmospheric pressure, wind, etc. These conditions are studied in meteorology, the science of understanding weather and weather forecasting. This is said to be your meteorology. You can write down the definition of meteorology, 1 marks question. The science of understanding weather and weather forecasting. पहले से ही पता कर लेना कि मौसम आगे क्या है, बारिश होगी, धूप है, ठंड है, क्या है. That is said to be your meteorology. Meteorologist, scientists who study weather. ठीक है, meteorology to understanding the weather and weather forecasting. और meteorologist क्या है, जो इसको स्टडी करते हैं वेदर के बारे में. Record these elements for the weather every day. Every day they recorded it. A sample of weather forecast on internet. You can see. When you wake up, you have mobile in your hand. Then you can see on your mobile screen that it is this degree. Okay. So that is said to be your weather forecast. Every day, such constant recording of weather information helps in determining the climate of the given region. The constant recording of weather information is said to be your weather recording. It was done by meteorologists and this study is said to be your meteorology. After that, the weather elements. अभी हमने बोला था weather elements हम आपके टेम्परेचर हो सकता है, क्लाउडीनेस हो सकती है, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So let us study in about them in brief. Let us now try to understand the meaning of different elements that define the weather at given place. First है आपका temperature. Temperature is the indicator of the degree of hotness or coldness of the air. So this is the definition of the temperature. It is the measure of hotness or the coldness of the air. Temperature on Earth averages 15 degrees at sea level, but varies according to the latitude, elevator, season and time of the day. ठीक है, ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, एलिवेटर के अकॉर्डिंग, सीजन के. जैसे जैसे दिन का टाइम चेंज होता है अकॉर्डिंगली इट विल चेंज. ठीक है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, एलिवेशन, सीजन एंड टाइम ऑफ द डे. इट कैन रेंज फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाइट ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस टू अ रिकॉर्ड low of minus 88 degree Celsius. Temperature is generally highest in the
tropics and lowest near the poles. So this is the important point you should know. So temperature is highest at tropics and lowest at the poles. On any given day, it is usually warmest during mid-afternoon and coldest around dawn, just before sunrise. ठीक है? So temperature is the measure of hotness or coldness of the air. On Earth, average temperature is about 15 degree Celsius at sea level, but ये accordingly आपका change होता रहता है. Latitude, elevation, time of the day, season के according it go changing. इसकी range क्या है आपकी 58 डिग्री सेल्सियस हाइट पर से to lowest क्या है -88 डिग्री सेल्सियस. तो जनरली आपका हाई होता है ट्रॉपिक्स पर और लोवेस्ट कहाँ होता है पोल्स पर. ठीक है. इट इज यूजुअली वार्म्स. ठीक है, थोड़ा गर्म होता है ड्यूरिंग मिड आफ्टरनून और कोल्ड कब होता है जस्ट बिफोर सनराइज. सनराइज सन निकलने से जस्ट पहले. ठीक है. आफ्टर दैट ह्यूमिडिटी. सेकेंड एलिमेंट ह्यूमिडिटी. Humidity is a measure of the amount of water vapor present in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है. The most common measure of humidity is the relative humidity. It equals the amount of water vapors actually present in the atmosphere divided by the atmosphere maximum water vapor holding capacity at that temperature. Okay. तो ह्यूमिडिटी क्या है आपकी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और इसको रिलेट किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी से. इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट in atmosphere divided by the atmosphere maximum water holding capacity at the temperature. Sometime क्या होता है हमें स्वेटिंग होती है तो दैट मीन्स क्या है पसीना ज़्यादा आता है. तो इसका मतलब क्या वाटर वेपर क्या है ज़्यादा है इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर ह्यूमिडिटी. सो टुडे वी हैव रीड योर फर्स्ट वेदर के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. फिर हमने मीट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा. फिर मीट्रोलॉजिस्ट पढ़ा कौन होते हैं. देन हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया. ठीक है. तो देयर आर मैनी एलिमेंट्स प्रेजेंट लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टुडे हमने डिस्कस किया फर्स्ट टेम्परेचर. ओके. सेकंड हमने ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस किया. नाउ थर्ड इज क्लाउडीनेस. मोस्ट क्लाउड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेस अप. ठीक है. एयर जब कूल होती है एंड इट राइजेस अप व्हेन एयर टेम्परेचर गेट रिड्यूस्ड. टेम्परेचर क्या होगा कम होगा. द एक्सेस वाटर वेपर इन अ एयर कंडेंस इनटू अ लिक्विड ड्रॉपलेट. वाटर वेपर कंडेंस होंगे लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में और आइस क्रिस्टल टू फॉर्म क्लाउड्स और fog. Fog refers to the clouds that almost touches the ground. In dense fog, the visibility range may be around 50 meter or so on. So this is all about your 3 elements we discussed today. 3 elements we will discuss next time. So read it properly, understand it. Thank you and have a nice day.